Good morning, my dear student. So let's come to page number 40 of your computer book. So today we are going to start our next chapter, that is ethics and safety measures in computer. Ethics means what are the manners, the rules that you have to follow when you are surfing the net. And safety measures means the precautions that you should take to avoid the virus and something which can happen. Something means the cybercrime which can happen when you are using the internet. So internet, I think you all know about the internet. It is a net of thousands of million of computer connected at the same time. ठीक है, it is one of the largest information database. ठीक है, it has become a vital part of our life, now without internet, or especially in this corona epidemic. Without internet, how can we do all our important work? We used to deposit our fees, school fees. We used to do all the banking transaction, our electricity bill, water bill, and all other bill through internet banking. So it becomes a vital part of our life. ठीक है, internet is a boon to the world. Almost every aspect of our life is touched by internet. So internet क्या है? जब मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ कंप्यूटर एक साथ इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो वो क्या है? नेट ऑफ वेब है. जैसे आप स्पाइडर वेब देखते हैं, ऐसे ही क्या है? मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ कंप्यूटर का वेब क्या है? इंटरनेट है. सो नाउ what are the advantages of computer? ठीक है, कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या हैं? तो सबसे फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट इज advantage of internet is education is completely changed. You can see nowadays you are taking online classes and we are preparing notes for you, so that all is done with the help of internet, because we are connected with the internet. That's why wherever you are sitting, you are getting your classes. ठीक है, and the teachers and many of the distance learning education जैसे इग्नो है और सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी है, they are giving online classes and providing the facilities. ठीक है, these are the universities. So from last many years they are training the student through these online classes. Okay, so next we have convenient mode of communication. Convenient mode, why it is said convenient mode of communication? Previously we have to write letters, okay, then we have to post it, we have to stick the stamps, then we have to post it into the post box, and according to the traditional post from one city to another city, it reaches to the destination. It takes a lot of time, it wastes our money, too much of money. But nowadays, okay, if somebody is sitting out of the country, even we can communicate with him through internet and in a very less cost, and it is very fast delivery. ठीक है, जैसे हमने किसी को मेल लिखा तो मेल क्या होगा? हम दोनों को इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, and within a minute or a second we can send mail to him. If you want to chat him live, so we can do the online chatting also. So these internet, through internet the mode of communication become so easy. Next क्या है? बिजनेस. जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कोई करते हैं, तो अभी बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो क्या है? ऑनलाइन हो गए हैं. ठीक है, देखिए, opportunity of business to offer good and services online which provide us the beneficials. ठीक है, meetings can be conducted inexpensively through the video conferencing facilities which physically visit the places. ठीक है, e-commerce क्या है? It is the concept used for any type of commercial for business deal that involve the transfer of information across the globe by using the internet. Nowadays, many companies have their own portal or website which are used for
E-commerce. E-commerce means electronic mode of business is known as e-commerce. ठीक है. Now we can buy things, purchase things, sell things online. Next we have media and entertainment. What do you mean by media and entertainment? Media means the movies that we are watching through internet or on internet, the songs, ठीक है, that we can download and watch on internet. Previously what happened, we have to go to the theater to watch a new movie, and once we have watched, we cannot take it with us home. But now through internet we can download that movie and watch as many times as we want. नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग. सोशल नेटवर्किंग तो आपको पता ही है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं. कैसे? थ्रू चैट्स. ठीक है, तो ये क्या है? सोशल नेटवर्किंग है. ठीक है. फोरम मीन्स क्या होता है? फोरम एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर ऑनलाइन डिस्कशन होता है नेट में, और जो इंटरेस्टेड यूज़र होते हैं, दोज हु हैव द कॉमन इंटरेस्ट. सपोज मेरा पॉलिटिक्स में कॉमन इंटरेस्ट है, तो मैंने एक फोरम क्रिएट कर दिया, मैंने वहाँ लोगों को इनवाइट किया, मैंने कुछ वहाँ पे पोस्ट किया. सो एनीबडी कैन पोस्ट देयर व्यूज़ ऑन माय पोस्ट. ठीक है. सो ये क्या है? फोरम्स होते हैं. नेक्स्ट है हेल्थ एंड फिटनेस. हेल्थ एंड फिटनेस मीन्स through internet now you can see we get so many ideas of how we can take care of our health. Exercise videos are there, so we can go through these health and fitness sites and take advantages of them. ठीक है. So these are the various benefits that we get from internet. Next we have disadvantages of internet. So along with the advantages, every coin has two sides. ठीक है. As we have number of advantages of computer, at the same time we have some disadvantage of computer. First क्या है? Virus threat. Virus threat means, and whenever we are connected through internet, every time we have a risk of getting virus in your computer. ठीक है. और वायरस क्या क्या कर सकता है, दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट चैप्टर. नेक्स्ट है स्वैम्पिंग. स्वैम्पिंग मीन्स होता है अनवांटेड मेल. अनवांटेड मेल्स मीन्स हमें पता नहीं है कहाँ से आ रही हैं, क्या है, और थाउजेंड एंड हंड्रेड्स ऑफ मेल can come in our inbox and it can take up our space. ठीक है. It refers to a unwanted mail and that are commercially nature sent indiscriminately to a multiple mailing list. ठीक है. एक साथ ही वो लिस्ट जिसने भी स्वैम्प बनाए होंगे मल्टीपल एड्रेस पे रेंडमली भेज दी जाती हैं, और वो एड्रेस किसी ना किसी से बाई चांस कनेक्ट हो जाता है, एंड हिज और हर मेल बॉक्स कैन बी फुल ऑफ दिस स्वैम्स. ठीक है. थ्रेफ्ट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मीन्स जब भी हम इंटरनेट पे काम करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आपको पता है कि स्पाईवेयर्स होते हैं जो चेक करते हैं हमारा पासवर्ड स्टील कर सकते हैं, फिर हमारा बैंक ट्रांजैक्शन में कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो एवरी टाइम वी हैव अ थ्रेफ्ट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन. थ्रेट मीन्स डर रहता है हमें चोरी का. ठीक है. पोर्नोग्राफी क्या है? ठीक है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है. पोर्नोग्राफी क्या है? जो कि एक इंटरनेट यूज़ करते करते समटाइम वी हैव it gives a very bad hazard or impression on the children's mind. What they are watching, they have the addiction of that, so that is known as pornography. Cyber terrorism means, ठीक है, as we are on the internet we don't know who is watching our mail and from where we get the mail. So in जो जितने भी modern terrorists हैं, organization है, they plan all their attacks and send message to their terrorists through these internet nowadays. ठीक है. और last है wastage of time. ठीक है. Sometimes some advertisement coming on the internet, they force us to see them. वो इतने attractive होते हैं कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते उन्हें देखने से. So sometimes it is a total wastage of time. ठीक है. So next part we'll do in the next video.